If you are suffering from advanced grade baldness like Norwood 6 or Norwood 7 and you want to undergo a hair transplant, and if you wonder how this is planned and what kind of results you can expect out of this, then this video is exactly made out for you. Hi, I am Dr. Satya Saraswat, a gold medalist plastic and cosmetic surgeon and a diplomat of American Board of Hair Restoration Surgery. If you want to keep on watching such kind of videos on our channel, kindly subscribe to our channel. In this video, we will discuss a case of Mr. Baljit, who was 42 years at the time when he presented to us in July 2021. He was suffering from grade 6 Norwood baldness and had tried some medical treatments and had attempted to reach out to some clinics for hair transplant. But then he came to us, and then how we planned out, this is the main crux of the video. He had a hair loss history of 7 years and he did not have any major illnesses or medical problems before he underwent a hair transplant. He did not have allergies and other things which we usually ask before the hair transplant. He wanted to undergo a hair transplant and was very motivated for this kind of procedure. He had a preliminary knowledge about the hair transplant, but then still we discussed the entire procedure with him in detail. After the discussion about the procedure, we did a trichoscopy for him. Tricho means hairs and scopy means seeing a small thing under a magnified image. So trichoscopy means a magnified assessment of the donor site as well as the recipient site. His trichoscopy showed an average thickness of 90% of hairs being terminal, which is like more than 0.06 millimeter, which signified a good donor site, and his average density was around 80 to 85 follicular units per centimeter square at the donor site. He had a big area, so we planned this procedure in 2 stages, 1 year apart. The first procedure for the front, going up to the transition zone, we planned for around 4500 grafts at a density of approximately 40 follicular units per centimeter square. And the back area was around 40 centimeter, the crown, and in which we planned around 1400 grafts in the next sitting. So his total grafts were almost approximately 6000. First procedure was planned in July 2021. So the entire sequence of event is we get all the investigation done, and then on the day of the procedure we do the sensitivity test and do the ECG and other important things to see if the procedure is safe for him. Then we trimmed the hairs and gave local anesthesia all around in a ring block fashion. After that, we made the slits, keeping in mind the normal angle and directions of the hairs in each of the individual area. That's how we made the required number of slits all over the recipient area from the hairline till the transition zone. After this, we have to change the position and make the patient lie down on his face down, and in this position we take out the grafts from the donor side. So we took out from the entire donor side. Donor side was quite good and healthy as we have discussed, and then we took out approximately 4550 grafts in this case. His 1 hair, 2 hair, 3 hair and 4 hair grafts are mentioned on the screen, and we took out approximately 4550 grafts. This yielded around 10,000 hairs at an average number of 2.2 hairs per follicular unit in the first sitting. Then our team inserted the grafts into the slits already made. Then he went, and then he used to come for the frequent follow-ups like shampooing, and then after 3 months he used to come for the PRPs. Multiple sittings of PRP were planned for him. And then at the end of 1 year, after a year or so, we planned for the crown area. The distribution of 1, 2, 3, 4 hair grafts for the crown is also mentioned here, and the total number of grafts, average yield is also mentioned. We had discussed in the very beginning that crown generally does not give that good results as we get in the front. So because of the peculiar arrangement of the hairs where they are coming out at an angle to each other, and slightly lower density transplant was performed in the crown because of the lack of donor site also. So this was the entire procedure and the procedural details of this patient. So if you like this planning and the procedure as we have discussed, please like this video. If you have any such comment about your planned procedure or you have any queries about your procedure, do write down in the comment section below and we will reach out to you with the personalized answers for that. In these pictures, we will see how Mr. Baljit used to look before the procedure and how he appears now after around 2 years of his procedure, how his hairs look, how the combing is done, how natural the hairline and the results are, and how happy he is. If you have any such queries, do call us on the numbers
written here about your personalized problems. In the combing videos, you can not just see the recipient area but the donor site also. How well preserved the donor site looks even after 2 transplants we have done. If you are in the beginning stages of your hair loss and are looking for medical treatments and procedures like derma roller, then this video given in the link above shows various important aspects of derma roller. Now in this video, let us see what Mr. Baljit himself feels about his results in his very own words. मेरा नाम बलजीत सिंह है और मैं फरीदाबाद सेक्टर 3 में रहता हूँ। मैं पेशे से आईटी इंजीनियर हूँ और दिल्ली एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। तो मेरा हेयर लॉस स्टार्ट हुआ था लगभग 10 साल पहले, यानी कि अब 2023 है, तो मेरा लगभग इससे 13 के आसपास हेयर लॉस स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे झड़ने लगे। मैं जब नहाता था तब गिरते थे, बेड पे जब सो के उठता था तो वहाँ पे देखता था हेयर झड़ते रहते थे। तो मैंने सोचा मौसम या चेंज की वजह से सीजनल हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही फास्ट हुआ और मेरे लगभग सारे के सारे बाल 5 साल के अंदर अंदर लगभग ख़त्म होने को हो गए। तब मैंने क्या किया, मैंने सर्च करना शुरू किया कि इनका कोई ट्रीटमेंट। तो मेरे को लोगों ने बोला कि ये आयुर्वेदिक तेल लगा लो, ये एलोपैथिक मेडिसिन ले लो, तेल लगा लो, क्रीम लगा लो। ये मैं सब ट्राई करता रहा, अलग अलग शैम्पू, कई कॉस्टली शैम्पू लगाता रहा, इनको वॉश करता रहा, मसाज करवाता रहा। तो मेरे को फिर भी बालों का झड़ना नहीं रुका। तब फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया इंटरनेट वगैरह पे। मेरा कोई यार दोस्त किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद ही देखा कि हेयर के बारे में क्या क्या हो सकता है इंटरनेट पे, कि फरीदाबाद में नियरेस्ट कोई है। तो मैंने फाइंड आउट किया कि डॉक्टर सारस्वत हैं, त्वचा क्लिनिक है और हमारे पास में ही। मैं सेक्टर 3 में हूँ और ये सेक्टर 11 में है। और इतने अच्छे से मेरे को उन्होंने कन्विंस किया, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो मतलब बहुत ही अच्छी टेक्निक है और यहाँ से तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। डॉक्टर सारस्वत ने फिर मेरा जो कैमरे से फ़ोटो वगैरह लिए, उन्होंने हेयर का जो डेंसिटी है, हेयर कितना थिन है, थिक है, कितना उसके अंदर ताकत है, वो सब कैलकुलेट किया और सारा का सारा मेरे को उन्होंने सारा बता दिया कि किस तरह से आपको क्या आपका होगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ मेरे को उन्होंने बता दिया। उसके बाद फिर मेरा सर्जरी का उन्होंने सर्जरी की जो डेट है वो मेरे को लगभग 1 मंथ बाद मिली थी। मेरा डिस्कशन जो हुआ था वो जून में, और 23 जुलाई के आसपास मेरे को वो सर्जरी की डेट मिली। अच्छा, ट्रीटमेंट के दौरान मेरे को उन्होंने इस तरह से कंफर्ट किया, बातें करके वो करके, मेरे को पता ही नहीं लगा कब मेरी सर्जरी हुई और कैसे। उसके बाद फिर 5 डेज का एंटीबायोटिक वगैरह दिया और वो सलाइन डालने के लिए, तो वो सब चलता रहा। और जो भी ग्राफ्ट लगे उन्होंने मेरे को काउंटिंग, वो कंप्यूटराइज काउंटिंग आती थी, कितने उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए, कितने इम्प्लांट किए, वो काउंटिंग उन्होंने की। हाँ, और ग्रोथ जो है मेरी वो अच्छी हुई। मेरा कुछ दिन के बाद जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था कि आप 3 मंथ बाद, 5 मंथ बाद, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मैंने जो हेयर थे यहाँ के मेरे गए हुए थे और क्राउन भी बहुत गया हुआ था, तो मेरे को अच्छा रिजल्ट आया, मतलब 100% रिजल्ट आया मेरा। कि मेरे को यही कोई भी यार दोस्त, किसी भी यार दोस्त ने मेरे को ये नहीं बोला कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं। उनको ये लगा था कि यार बलजीत के नेचुरल हेयर कैसे आए और कैसे क्या किया। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट, मेरे को फिर हर जगह से वो मिलना लगा कि भाई अरे वाह, कि कितना अच्छा आपका हेयर ग्रोथ किया है, घर में भी सब जगह बातें करने लगे। फिर जब मेरा अच्छे से ये फ्रंट हेयर अच्छा हो गया, तो मेरे को फिर ये मैंने क्राउन के लिए भी बात किया। और क्राउन नो डाउट, क्राउन का मैंने ये सुना था कि क्राउन का इम्प्लांट ट्रांसप्लांट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर सारस्वत बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और क्राउन के तो ये मतलब ये लगा लो माहिर हैं। क्राउन का हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप करवाओ। फिर मैंने कुछ दिन बाद क्राउन का करवाया और उस क्राउन का करवाने के बाद मतलब इमेजिनरी चेंजेस आए और हर
बंदे ने मेरे को ये बोला कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। और बाकी अब आप देख ही रहे हैं जो हुआ। कॉस्ट, इनका जो कॉस्ट है वो वर्दी है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे मार्केट से तो मार्केट से इनका कॉस्ट हाइयर है, मतलब 40-50% हाइयर है, लेकिन उसका ये आपको पे करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोगों ने मेरी सर्जरी के दौरान हेल्प की, हरी सर हैं, पांडे सर हैं, नरेंद्र जी हैं, शिवानी हैं और डॉक्टर सारस्वत हैं, तो मैं इन सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे जो ड्रीम था कि मैं यंग दिखूं इस एज में भी, इन्होंने मतलब मेरी 15-20 साल उम्र कम कर दी है। If you want to know about the cost of hair transplants and various factors affecting the cost, do click on the video on the left. Thank you.